So today we'll be starting off with the mitotic cell cycle or mitotic love से पता लगता है that this cell cycle that we are talking about is regarding mitosis. Can you tell me what is mitosis और meiosis से कैसे different होगा ये? सेल डिवीजन होती है एंड कॉपीज फॉर्म होती है। Good. Cell division है और copies बनते हैं. तो meiosis और mitosis कैसे फर्क होंगे? इसमें exact copies बन रही हैं. इसमें सेम क्रोमोसोम्स की बनती है, उसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड हो जाते हैं। गुड एग्जैक्टली वहां पे क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यहाँ पे सेम नंबर ही रहते हैं। वहां पे हाफ होते हैं और बाद में जब एक वो बेबी प्रोड्यूस होता है उसमें जाके डबल होते हैं। प्लस दीज आर एग्जैक्ट फोटोकॉपीज ऑफ ईच अदर। इस टाइप ऑफ डिवीजन में एग्जैक्ट फोटोकॉपी प्रोड्यूस होती है, जैसे प्लांट्स हो गए एग्जैक्ट कॉपी की तरह, लेकिन एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो मेयोटिक सेल साइकिल करते हैं जो आप A2 के अंदर आके पढ़ोगे। तो माइटोसिस हम पढ़ते हैं AS में, और जो आपके पास meiotic cycle आएगी that is in your A2. So in this chapter, we are going to describe the structure of chromosomes, outline the cycle of events by which body cells grow to a certain size, divide into two, the behavior of chromosomes during mitosis, the stages of mitosis, importance of mitosis, role of telomeres, role of stem cells, and how uncontrolled cell division can lead to cancer. So starting off with growth and reproduction. All living organisms grow and reproduce, and living organisms are made up of cells. So this means that cells must be able to grow and reproduce. Cells reproduce by dividing and passing on copies of their genes to the daughter cells, and the process must be very precisely controlled so that no vital genetic information is lost. In chapter 6, जो आपका इससे next chapter होगा, you will learn that how DNA is replicated through semi-conservative replication, और all कितने different किस्म के models होते हैं. But in this chapter, you will learn how whole cells can do the same. वहां पे तो DNA replication होगा, यहाँ पे हम cell replication एक तरह से पढ़ेंगे. And in chapter 1 recordings, we have already seen that one of the most easily recognized structure in eukaryotic cells is the nucleus. The importance of the nucleus has been obvious ever since it was realized that the nucleus always divides before a cell divides. And each of the two daughter cells therefore contain its own nucleus. And it is important that every cell has its own nucleus because the nucleus is responsible for controlling the cell activity. जरूरी है कि दोनों cells का अपना ही nucleus हो. And they both contain this genetic material as well. And if they have the same DNA, they have the same sets of instruction and the same code of life, yeah, but the same code for the proteins as well. All the cells in the body of multicellular organisms are genetically identical, apart from the reproductive cells known as gametes. This is because they all come from one cell, which is known as zygote. ठीक है, gametes मिलके form a zygote, and this zygote is the cell form when one gamete from your mother and one gamete from your father is used. From father, the sperm gamete, and from mother, the egg gamete combine together to produce a zygote. And when the zygote starts the process of growth, it divides into two cells with identical nuclei, which involves a type of nuclear division called mitosis. And this process of nuclear division, यहाँ पे we are actually replicating the whole nucleus and the whole cell. DNA replication के अंदर only DNA is replicated. And this is supposed to be a repeated cycle, which we call as the mitotic cell cycle, the name of it, chapter number 5, that produces all the cells of your body, about 30 trillion in an average human. And we are going to study the process of mitosis and mitotic cycle in this chapter. So if I ask you, what do you think are chromosomes? जेनेटिक मटेरियल। Good. And why does any, Coiled, what's the importance of genetic material? they are packed and coiled and can divide to form chromosomes. Good, good. ठीक है. And chromosomes have which information? Such as, give me an example. What kind of information does this chromosome and DNA have? And they have protein code and genetic information. Exactly. Protein code है, genetic code है. For example, even your hair color, eye color, skin color, height, weight. These are all certain characteristics. Characteristics are a part of DNA. DNA are a part of chromosomes, and chromosomes are a part of nucleus. Just before a eukaryotic cell divides, a number of thread-like structures called chromosomes gradually become visible in the nucleus, और वो नजर आने लगते हैं जैसे अभी सेल डिवाइड होने ही वाला होता है. What happens? ये chromosomes हल्के हल्के visible हो जाते हैं और वो एक chromatid फॉर्म में आ जाते हैं. This is we call as a chromatid form.
क्रोमोसोम्स वैसे इस तरह के होंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम, बट जैसे ही टाइम आ जाएगा सेल डिवीजन का, वो इस फॉर्म में आ जाएंगे, विच इज नोन एज chromatid. They are easily seen because they stain intensely with particular stains, and before their function was known, they were called chromosomes because chromo means color and somes mean body. So inside a nucleus, you have a nucleolus first of all, ठीक है, और ये होते हैं आपके पास लूजली पैक्ड व्हाट, लूजली क्रोमोसोम्स है। बिल्कुल, जैसे ही सेल डिवीजन का टाइम आता है न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, लेकिन जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दे कम इन द शेप ऑफ अ क्रोमैटिड। क्योंकि क्रोमैटिड की शेप में क्यों आते हैं? बिकॉज दे आर नाउ इजी टू बी सीन, इजीली मूव और इजीली विजिबल है। नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल्स में देर आर ओनली 46 क्रोमोसोम्स, फ्रूट फ्लाई में फर्क होगा, 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। So before studying nuclear division, you need to understand a little about the structure of chromosomes. अब ये आप एक क्रोमोसोम देख सकते हो, which is in a shape of a chromatid right now. टीलोमेर्स होते हैं। टीलोमेर्स वो एंड होते हैं जिसका भी हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे। देन क्रोमोसोम्स के अंदर आपके पास जीन्स होती हैं, और इन जीन्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, दिस होल इज अ डीएनए। अब जीन्स किस चीज की होती है? हेयर कलर जीन, जेनेटिक जीन, हाइट जीन, हाइट की है, आई कलर, स्किन कलर कैसा होगा, ठीक है, ये सारी जीन्स होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। योर फेस स्ट्रक्चर्स, योर बॉडी स्ट्रक्चर्स के जीन है। इन रियलिटी ईच क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। Centromere वो point that holds the two chromatids together. This is the first chromatid and this is the second chromatid. इसको hold किसने रखा हुआ है? The centromere which is in the center. टू आइडेंटिकल क्रोमोटिड्स मेक वन क्रोमोसोम। आपके पास क्रोमोसोम ऐसे ऐसे करके अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन जब दो क्रोमैटिड्स फॉर्म में आके वो ज्वाइन होंगे, वो फिर एक क्रोमोसोम को ऐसे करके विजिबल बना देंगे। इज दिस क्लियर, द स्ट्रक्चर? Yes. So you can see that the chromosome at this stage is a double structure. It is made up of two identical structures called chromatids, which are joined together, and the two identical chromatids of one chromosome are known as sister chromatids. There are two chromatids because during the period between nuclear divisions known as interphase, each DNA molecule in a nucleus makes an identical copy of itself. तो क्रोमैटिड क्या है? Chromatid is one of the two identical parts of a chromosome held together by a centromere formed during the interphase by the replication of DNA strand. So each chromatid contains one of these DNA copies. हर chromatid के पास ही एक एक DNA की कॉपी होती है, और ये दोनों सिस्टर chromatids हैं। ये पहली सिस्टर chromatid and this is her sister. इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखा हुआ है सेंट्रोमेयर ने। दिस इज वन क्रोमोसोम, और इनके ऊपर फिर आपके ये जीन्स लगे होते हैं हर किस्म की कैरेक्टरिस्टिक की, आपकी हर किस्म की प्रॉपर्टी की। द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ नैरो रीजन कॉल्ड द सेंट्रोमेयर टू फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम. The centromere could be anywhere along the length of the chromosome, but the position is characteristic for a particular chromosome. DNA is the molecule of inheritance and it is made up of a series of genes. Each gene is one unit of inheritance, and the two DNA molecules, one in each of the sister chromatids, are identical. This means that the genes on the chromatids are also identical, and the fact that there are two identical chromatids is the key to precise nuclear division. Precise nuclear division भी इसलिए हो रही है because both of the chromatids are sister-like. They are exact like each other. बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं. When cell divide, one chromatid goes into one daughter cell and one goes into the other daughter cell, making the daughter cell genetically identical. सो मच इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए कि आप सोचो कि असल में डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। एक्चुअली जो एक डीएनए का साइज तो होता है 1.8 मीटर्स। तो इमेजिन कि ये पूरा डीएनए जो है कितना ज्यादा कॉइल 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 हुआ होगा, और आपके एक सेल के अंदर होगा। सोचें एक धागा हो बहुत लंबा सा, आप उसको कितना छोटा कर दोगे कि वो बिल्कुल एक बॉल सा हो जाए, छोटा सा। इसी तरह द होल डीएनए इज एक्चुअली पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। गॉट इट? Yeah. So this has to be packed into a nucleus, which अब nucleus खुद कितना है? 6 micrometer in diameter, which is equivalent of trying to get 18 kilometer of length into a ball which is only 16 centimeter in a diameter. वही बात हुई कि 18 किलोमीटर का धागा आप एक्चुअली एक 6 सेंटीमीटर के बॉल में एक बंद कर रहे हो। अब प्रिसाइज, अब ये टैंगल हुआ होता है, ये जो डीएनए है ये टैंगल होगा डिफरेंट नॉट्स में, थोड़ा सा इधर फिर थोड़ा सा इधर, ये इस तरह करके डिफरेंट नॉट्स में टैंगल्ड होता है डीएनए, समथिंग लाइक दिस जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया।
द डीएनए इज वोन्ड अराउंड आउटसाइड ऑफ दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब वो बोन्ड किसके इर्द गिर्द हुआ है, मतलब कि बंधा किसके इर्द गिर्द हुआ है, ये देखो यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं जिसके इर्द गिर्द वो अपने आप को बांध लेता है। ठीक है, दीज आर दोज प्रोटीन जिनके इर्द गिर्द वो अपने आप को कॉइल कर देता है। दीज प्रोटीन्स आर नोन एज हिस्टोन proteins. The combination of DNA and proteins is called chromatin, and chromosomes are made of chromatin as well. Chemically speaking, most of the proteins are basic and are a type known as histones because they are basic and they can interact easily with the DNA molecule as well, which is acidic. Chromosomes also possess two or more features essential for successful nuclear division. Centromeres and telomeres are also visible over here, और telomeres बिल्कुल उनके edges होते हैं if you look at the structure of a chromosome. Let me show you one thing.